Hello, you're watching Hornbill TV's Primetime Bulletin. Now headlines. President Donald Trump announced on Sunday that he is imposing a 100% tariff on all films produced outside the United States, asserting that Hollywood is being devastated by the growing practice of American filmmakers and studios outsourcing production to foreign countries. The ED arrested Congress's former Haryana MLA Dharam Singh Chauker from a five-star hotel in New Delhi Monday morning in connection with an alleged money laundering scam worth Rs 1,500 crore. Government of India has terminated the service of Dr. Krishna Murthy Subramaniam, an Executive Director India for the IMF, 6 months before his term ended. India's External Affairs Minister S. Jaishankar, on being asked about partnership with the European Union, said India was looking for partners, not preachers, particularly those who do not practice at home but they preach abroad. For the news in detail, BJP Northeast in charge Sambit Patra, who is currently in Manipur, met former Chief Minister Biren Singh at his residence at Luang Sangbam after returning from Churachampur. Padra had also invited BJP MLAs for a meeting at Imphal Hotel. MLA K. Ipomcha, S. Kunjangeshwar Singh and Karam Shyam were seen arriving at Imphal Hotel. These political activities are being taken as BJP's efforts to bring popular government in the state. There is a growing demand for a popular government in the state, and recently 21 BJP MLAs has written to the Prime Minister of India to reinstate popular government. Bharat Adivasi Party MLA of Rajasthan, J. Krishan Patel, has been arrested by the Anti-Corruption Bureau for allegedly accepting Rs 20 lakh bribe from a mine owner. According to ACB DG Ravi Prakash Mahindra, Patel was trapped by the ACB team on Sunday while accepting Rs 20 lakh. The complainant, Ravindra Singh, who is from eastern Rajasthan, owns mines. The MLA had listed some questions related to these mines in the assembly and had told the complainant that if he only gives him money, he will withdraw the questions. Police said that they have audio and video related to the case. He further said the entire deal was for about Rs 2.5 crore and it was decided that the amount would be given in installments, and after that the questions listed in the assembly would be withdrawn. विधायक हैं श्री जय कृष्ण पटेल बागीदोरा बांसवाड़ा के हैं, उनको आज एसीबी टीम ने 20 लाख रुपए लेते हुए ट्रैप किया है। ये ट्रैप की कार्रवाई काफी दिन से ये ऑपरेशन चल रहा था। हमारे पास परिवादी रविंदर सिंह, जो कि उस एरिया के नहीं है, वो पूर्वी राजस्थान के हैं, उनकी माइंस हैं। इन माइंस के बारे में एमएलए साहब ने कोई प्रश्न लगाए हैं विधानसभा में। जो प्रश्न लगाए उस एवज में इनको अप्रोच किया एमएलए साहब ने। जब इनको अप्रोच किया तो इन्होंने इनसे बात की कि साहब क्या बात है। तब इन्होंने बताया कि भाई जो प्रश्न है मैं वापस ले लूंगा अगर आप कुछ मुझे पैसे दें तो। एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं है लेकिन भाव यही है। उसके बाद ये बांसवाड़ा भी गए, परिवादी रविंदर सिंह बांसवाड़ा गए और वहां पे भी इन्होंने 1 लाख रुपया एमएलए साहब को दिया था। वो सारा रिकॉर्डेड है, ऑडियो और वीडियो एसीबी की टीम से, एसीबी के डिवाइसेस में सब कुछ रिकॉर्डेड है। और फिर आज अंततः ये आने को यहाँ तैयार नहीं थे एमएलए साहब, लेकिन काफी मुझे लगता है कि एक तरह से डेस्परेशन था और आज ये यहाँ आए एमएलए क्वार्टर्स पे, और एमएलए क्वार्टर परिसर में आज ये जो ट्रैप की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया। 20 लाख रुपए लिए गए। ये सारी जो डील थी वो करीब 2.5 करोड़ में हुई थी परिवादी और एमएलए साहब के बीच में, और ये हुआ था कि भाई टुकड़ों में 20-20, 30-30 लाख दिए जाएंगे और इस तरह से 2.5 करोड़
पूरा करेंगे और उसके बाद ये प्रश्न जो लगाए गए हैं विधानसभा में उनको वो विड्रॉ कर लेंगे। सर कितने प्रश्न हैं ये? जी टोटल प्रश्न तीन प्रश्न। सर कांस्टेबल जो गनमैन है उसको भी कुछ फरार होने की सूचना मिल रही है? ना गनमैन कहीं फरार नहीं है। गनमैन जो खबरें मीडिया में आ रही हैं, गनमैन बिल्कुल यहाँ मौजूद है। गनमैन फरार नहीं हुआ है। फरार इनका कोई आदमी है जिसका अभी हमें जानकारी नहीं मिली है, एमएलए साहब बता नहीं रहे हैं, तो अभी पूछताछ एमएलए साहब से चल रही है और उसका जो ही पता चलेगा जो कैश लेके भागा है वो उसका रिकवरी हम करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास इतना एविडेंस है कि ऑडियो वीडियो सारा है और वो बहुत स्पष्ट है। आज का भी जो कार्रवाई है उसका भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। सर इसको रेड हैंडेड ट्रैप कहा जाएगा क्या? बिल्कुल ट्रैप कहा जाएगा और हमने ट्रैप में ही अरेस्ट किया है। क्या उस टाइम पे पैसे बरामद हुए? पैसे उस टाइम बरामद नहीं हुए क्योंकि इमीडिएटली जब तक एसीबी की टीम पहुंचती आदमी लेकर जा चुका था। लेकिन जो हमारी कार्रवाई ट्रैप के दौरान होती है हाथ धुलवाने की, उसमें एमएलए साहब के जब हाथ धुलवाए, फिंगर्स धुलवाई, तो उसमें रंग आया है। तो हमारे लिए सफिशिएंट है। उन्होंने नोटों को छुआ है, गिना है और हमारे पास जो ऑडियो वीडियो है उसमें स्पष्ट रूप से जो परिवादी है हमारा वो नोट गिना रहा है गाड़ी में और उस बैग को नीचे लेकर उतरते हुए एमएलए साहब दिख रहे हैं। President Donald Trump announced on Sunday that he is imposing a 100% tariff on all films produced outside the United States, asserting that Hollywood is being devastated by the growing practice of American filmmakers and studios outsourcing production to foreign countries. Trump said he has authorized the U.S. Department of Commerce and the U.S. Trade Representative to begin enforcing a new tariff on foreign-made firms, though details of the implementation remain unclear. He also accused other countries of enticing American filmmakers and studios to shift the production overseas. The president urged that films be produced domestically and announced a 100% tariff on all foreign-made movies entering the United States. President also said he is directing his government to reopen and expand Alcatraz, the notorious former prison on a hard-to-reach California island that has been closed for more than 60 years. We'll take a short break, so stay tuned. ब्लैक टाइगर सीमेंट, कमाल का काम, टाइगर है ना। दीवार पे कितना डैम्प है यार, पिलर में भी फ्रैक्चर। मैं तो नाम वाला सीमेंट ही लाया था, किसी काम का नहीं निकला। सीमेंट सिर्फ नाम वाला हो तो घर हॉरर स्टोरी बन सकता है, इसीलिए लाएं काम वाला सीमेंट। ब्लैक टाइगर सीमेंट का सुपर फाइन बॉन्ड और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बनाए घर का कोना कोना मजबूत। ब्लैक टाइगर सीमेंट, कमाल का काम, टाइगर है नाम। इंडिया दे फूड वेस्टेज तो बेसी डांगर दरकार आसे। बेसी मानु रातिते भात नाखाई किना घुमा भी आसे। आमी खान कुंबा खोताते ध्यान राखिले एनवायरनमेंट और दूसरा मानु के मदद करिबोले पारिबो। आमी खान इतु छयटा खोता के ध्यान राखिले एकटा रिस्पॉन्सिबल ईट राइट सिटीजन होबो। किमान लागे इमान ही किनिबी। फूड वेस्टेज नहबो कारणे कमटी सर्विंग्स ही लुबी। खाना बची जाइले ना फेलाबी और पर्यातक बचिया खाना तो अलग सब्जीते भी चोलाबी। दाल चना और अलग सुका खाना तो हवा न जाबोले लगादा बाटे रखिबी। पत्ता सब्जी फ्रूट्स दूध दही खान तो होदाय फ्रिज दे रखिबी। बची जा खाना तो आसपास लगे मानु खान के दी दिबी। और आखिरते पत्ता सब्जी फ्रूट्स खान तो रिसाइकल करिकिना खाद बनाबी।
Welcome back. Government of India has terminated the service of Dr. Krishnamurthy Subramaniam, an Executive Director, India for the IMF, 6 months before his term ended. No reason was furnished for his term being cut short by the government. The ACC, which took the decision, is headed by Prime Minister Narendra Modi. Subramaniam, who was the country's youngest chief economic advisor from 2018 to 2022, joined as the Executive Director India at the IMF in November 2022. Under this role, he represented India, Bangladesh, Sri Lanka and Bhutan at the IMF. Dr. Krishnamurthy Subramaniam, also known as KV Subramaniam, was the 17th Chief Economic Advisor for the Indian government and also the youngest to take on the role. According to the sources, Subramaniam is learned to have raised questions about the IMF's data sets, which did not go down well in the corridors of the multilateral agency. In the past too, the IMF has been unhappy with some of the statements made by Subramanian, especially related to India's debt situation. Meanwhile, Parameswaran Iyer, Executive Director at the World Bank, has been temporarily entrusted with the responsibility of being India's nominee director on the board of International Monetary Fund ahead of a crucial May 9 meeting. According to sources, had India not nominated Iyer, the alternative executive director Harish Chandra Pahad Kumbure Kedara of Sri Lanka would have discharged duties of ED as per the rules of the Washington-based multilateral funding agency. India's External Affairs Minister S. Jaishankar, on being asked about partnership with the European Union, said India was looking for partners, not preachers, particularly those who do not practice at home what they preach abroad. Speaking at the Arctic Circle India Forum in Delhi, Jaishankar also defended India's continued engagement with Russia after the latter's invasion of Ukraine in 2022 on the grounds that the fundamental realism that international relation is based upon necessitates engagement with Moscow. Earlier, EU Foreign Minister Kaja Kallas has urged India head Pakistan to show restraint and pursue dialogue to ease the situation that escalated following the Pahalgam attack. Look, when we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So, the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. And I think these are all work in progress to differing degrees with different parts of Europe. So some have moved further, some a little bit less. I'm so tempted to make this conversation. The Enforcement Directorate arrested Congress's former Haryana MLA Taram Singh Chokar from a 5-star hotel in New Delhi Monday morning in connection with an alleged money laundering scam worth Rs 1,500 crore. A few weeks ago, the agency had attached his assets amounting to Rs 44.55 crore. Chokar is a close aide of former Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda. The case pertains to alleged irregularities in the allotment of flats, houses and plots by his real estate companies in Kulgam. The former MLA and his firms alleged amassed over Rs 616 crore from investors but failed to deliver the allotments. Chokar and his sons Sikandar and Vikas are being investigated in the case. In March, the ED had issued a provisional order under the Prevention of Money Laundering Act and attached about 3 acres of agricultural land, 2,487 square meter of commercial plots and 8 residential flats located in Delhi, Faridabad and Panipat in connection with the case. Fixed and bank deposits worth Rs 96 lakh were also attached as part of the same order.
A man who allegedly gave food and shelter to terrorists in Jammu and Kashmir's Kulgam district drowned after he jumped into a river while escaping from the security forces. According to reports, 23-year-old Imtiaz Ahmad Makre reportedly jumped into the rocky river after scanning the forested area briefly. He was picked up by the police on Saturday. During questioning, he told the police that he gave food and logistics to terrorists hiding in the forest in Kulgam's Tanmark. He agreed to lead the security forces to the terrorist hideout, sources said. On Sunday morning, while leading a joint team of the police and the army to raid the hideout, Makre, in a bid to flee, jumped into the Vesha River. Meanwhile, security forces have condemned those who are spreading misinformation about the incident and said security forces should not be wrongly blamed for the man's unfortunate death. Earlier on Sunday, People's Democratic Party leader and former Chief Minister Mehbooba Mufti alleged a conspiracy in the death of Imtiaz Ahmad Makre. We'll take another short break, so stay tuned. Every day goes through 136 quality checks, giving you a thick and tasty, perfect cup of tea. No wonder Nestle Everyday is your #1 choice. दीवार पे कितना डैम्प है यार, पिलर में भी फ्रैक्चर। मैं तो नाम वाला सीमेंट ही लाया था। किसी काम का नहीं निकला। सीमेंट सिर्फ नाम वाला हो तो घर हॉरर स्टोरी बन सकता है, इसीलिए लाएं काम वाला सीमेंट। ब्लैक टाइगर सीमेंट का सुपर फाइन बॉन्ड और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बनाए घर का कोना कोना मजबूत। ब्लैक टाइगर सीमेंट, कमाल का काम, टाइगर है नाम। Beautiful Home Studio Atrio Guwahati from Asian Paints is a space that kindles a connection, making every corner of your home come alive. Step inside to experience the aesthetics and the unparalleled comfort provided our home decor collection. It is not a studio, but a million possibilities that let you reimagine your home in your way. Welcome back. Bengal Governor C.V. Ananda Bose's report to Home Minister Amit Shah on the communal strife in Murshidabad last month reportedly includes a recommendation to clamp President's rule in the state if the situation deteriorates further. Highlighting alleged shortcomings in police infrastructure, the governor's report blames a shortage of seat personnel for Central Armed Police Forces being frequently required to step in. This has prompted CM Mamata Banerjee's Trinamool Congress to label it a police BJP and malign Bengal exercise. Meanwhile, Congress leader Atir Ranjan Chaudhary said implementing President's rule is not easy and cannot be arbitrarily implemented based on what the governor says. He, however, suggested that for things to be bettered, Mamata Banerjee's government should be removed, but not through President's rule. राज्यपाल सब क्या का सिफारिश कर चुके हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि राज्यपाल जहां सिफारिश पत्र देते हैं वो गृह मंत्रालय को भेजते हैं। इसका जानकारी गृह मंत्रालय से होगी, मुझे ये जानकारी नहीं है। फिर भी अचानक 356 धारा लागू करना इतना आसान काम तो नहीं है। हमारा देश में एक संविधान है, हमारा देश में जुडिशियरी है। अगर किसी की मर्जी से तो कोई धारा लागू नहीं होते, चाहे राज्यपाल हो चाहे कोई भी हो। मतलब
राष्ट्रपति शासन जारी करने के लिए, लागू करने के लिए जिस तरीके की माहौल बनना चाहिए वो बंगाल में बने ही है नहीं, इसका मुझे मालूम नहीं है किस लिहाज से ये कहे जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो बात मीडिया वालों ने उछल रहे हैं, इसके साथ मतलब जमीनी संपर्क नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर मानता हूं कि कानून और व्यवस्था के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए जिम्मेवार है बंगाल की प्रशासन, खासकर बंगाल के मुख्यमंत्री खुद, जहां दहशतगर्द के माहौल सारे बंगाल में छाए हुए हैं। इससे बचने के लिए ये सरकार और ये सत्तारूढ़ पार्टी, इनसे मुक्ति मिलना जरूरी है। लेकिन इनसे मुक्ति मिलने के लिए रास्ता तो एक ही है, वो चुनाव में जीत हासिल करना। इसके अलावा बैक डोर से, पीछे की दरवाजे से। West Bengal leader of opposition and BJP leader Suvendu Adhikari, however, welcomed the report submitted by the governor, but said the people of Bengal do not want reports and speeches but results. The way atrocities are being committed, especially against the Hindus, is worrying. The report submitted by the governor, जो जानकारी थ्रू मीडिया से मिला है, मैं तो नहीं देखा है, ये सही है कि गलत है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मीडिया से आया है ये रिपोर्ट को वेलकम करने वाला रिपोर्ट है। लेकिन बंगाल का जनता ये रिपोर्ट भाषण इसमें संतुष्ट नहीं है। दे वांट रिजल्ट। 2021 आफ्टर असेंबली इलेक्शन 2 में आज तक जिस तरीके से बंगाल में नरसंहार हो रहा है, खास करके हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसका ऊपर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। रिपोर्ट को वेलकम करते हुए जो मीडिया में आया थ्रू मीडिया, आई डोंट नो अबाउट द एक्चुअल रिपोर्ट, लेकिन वी वांट एक्शन, वी वांट स्ट्रॉन्ग एक्शन टेकन बाय द माने एज अर्ली एज पॉसिबल। वी वांट strong action. The constitution body should take appropriate action within early period to save the Hindus in West Bengal. दादा, आज भी कलकत्ता में आग लगी है। कलकत्ता में इस तरफ आग लग रहा है। ममता जिस दिन रहेगी 3 दिन आग ही लगेगी। Amid the escalating water sharing dispute with Haryana, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann on Monday stated that Punjab has no surplus water to spare, emphasizing that legal and data-driven evidence supports the state's stance. Speaking to reporters, Mann clarified that there is no dispute over water as Punjab has already fulfilled its obligations to Haryana. He stated that Haryana's request was based on earlier times when they used to get more water, noting that the times have changed now. Mann's remarks come in response to the Bhagra Peace Management Board's recent order that an additional 8,500 cusecs of water be released to Haryana from the Bhagra Nangal Dam on April 30. However, the Punjab government rejected the BBMB's decisions, raising concerns over decreasing water levels in key reservoirs. On May 1, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann mentioned that the water levels in Pong Dam, Bhagra Dam and Ranjit Sagar Dam are 32 feet, 12 feet and 14 feet below last year's levels. पानी का कोई विवाद नहीं है लीगली तौर पे, और आंकड़े जो हैं वो पंजाब के पक्ष में हैं। हमने जितना पानी उनको अलॉट किया था 1 साल के लिए, वो अपना 10 महीने में इस्तेमाल करके फालतू 2 महीने का पानी मांग रहे हैं। और उनके पास सिर्फ यही तर्क है कि पहले हमें मिलता रहा है जी 10-15 साल से, अब पहले वाली बात नहीं रही। हमने अपना कैनाल सिस्टम ठीक कर लिया। जब हमने ओथ ली थी 16 मार्च 2022 को, तब हम 21-22% पानी अपने खेतों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम 60% से ऊपर चले गए। हमने पाइपें दबा के खेतों तक पानी पहुंचाया, नहरों का, पुरानी कस्सियाँ, सूए, रजबाए हमने पुनर्जीवित किए। तो हमारा पानी, पंजाब का पानी हम खुद इस्तेमाल करने लगे। हमारे पास। That's all for now. Keep watching Hornbill TV.
दीवार पे कितना डैम्प है यार, पिलर में भी फ्रैक्चर। मैं तो नाम वाला सीमेंट ही लाया था।